A very warm welcome to all the attendees. Thank you so much for joining us. I can see a lot of attendees have just joined. So we are just about to start our session on Shopsy. Before we move ahead, I would like to introduce myself. My name is Ria. I'm your host for the day. And along with me, I have two other guest speakers, Ajita and Swapnil Paroha. So we would be conducting today's session. I'll take you through a presentation first. And after this presentation, we will have a question and answer round wherein our experts will pitch in and they will address all your queries related to Shopsy. We'll start today's session now and I'll try to explain you everything about Shopsy. So Shopsy by Flipkart. This is a brand new segment which gives you 0% commission platform and you can reach out to lots of customers. Now the question is, what is Shopsy? So as I said, Shopsy is brand new 0% commission platform by Flipkart. And this is for sellers to reach out to millions and millions of customers who are spread across numerous parts of the country effectively. Now, in this platform, it enables all the sellers to enhance their reach to approximately 200 to 5 million users who are electing to use e-commerce transactions. With Shopsy, sellers can cater to this overlooked category of consumers with resellers who are the consumers and trust and generate profit through trust-based selling platform. Now, I'll explain this in Hindi as well. मैं ऐसे हिंदी में भी एक बार एक्सप्लेन करती हूँ. कुछ सेलर्स जो हैं हिंदी लैंग्वेज रिक्वेस्ट कर रहे हैं. अब सवाल ये मन में आता होगा कि शॉप्सी क्या है. तो शॉप्सी एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म है जहां पे 0% कमीशन में आप एज सेलर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हैं. ये वो आप उन कंज्यूमर को भी रीच आउट कर सकते हैं जो जनरली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रांजैक्शंस नहीं करते. ये किस तरह से होता है? आप ये एक रीसेलर प्लेटफॉर्म है, आप कुछ कस्टमर्स को रीच आउट करते हैं और ये कंज्यूमर्स जो हैं आगे के कंज्यूमर्स को आपका प्रोडक्ट पहुंचाते हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. नाउ, as you all know that Shopsy is a brand new platform with 0% commission. You can list your products without professional photo shoot and you can reach out to budget friendly customers through reseller network. तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोफेशनल फोटोशूट की जरूरत नहीं है और आप बजट फ्रेंडली कस्टमर्स को रीसेलर नेटवर्क के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं. Now let's understand what are the benefits for sellers if you list your products on Shopsy. So there are multiple benefits for sellers as well. First, 0% commission, no verticals, fixed or collection fees needed. But this is applicable only if your verticals are listed on Shopsy. If your product is listed on Shopsy and Flipkart both, in that case, your fixed fees, collection fees, other fees are applicable. But if you are listed only on Shopsy, then there is no commission at all. अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ शॉप्सी में ही लिस्टेड है तो आपको 0% कमीशन लगता है. पर अगर आपका प्रोडक्ट अदर प्लेटफॉर्म यानी फ्लिपकार्ट में भी लिस्टेड है तो आपके जितने भी फीस एप्लीकेबल है फ्लिपकार्ट पर वो एज इट इज ही रहेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, एनहांस रीच टू मिलियंस ऑफ कस्टमर्स. So you will be able to reach out to huge number of budget friendly consumers through reseller network. Now these resellers reach out to customer base through their social media channels, as I've mentioned earlier. आप एक बार में ही काफी सारे बजट फ्रेंडली कंज्यूमर्स तक पहुंच सकते हैं और ये रीसेलर बनकर आगे के कंज्यूमर्स को रीच आउट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स. Next is easy image guidelines. As there is no restriction for image guidelines here, seller can upload tabletop, hanger images or images clicked through mobile phones. So since there are lowered guardrails,
there are very few must have attributes. So बहुत कम attributes हैं जो आपको भरना जरूरी है. यहाँ पे सारे गाइडलाइंस में काफी आपको लिबर्टी दी जाती है. इमेज गाइडलाइंस, कोई स्ट्रिक्ट इमेज गाइडलाइंस नहीं है. आप टेबल टॉप हैंगर इमेजेस भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल से खींचे हुए इमेजेस भी यूज कर सकते हैं, बट ये जो है सिर्फ शॉप्सी के लिए एप्लीकेबल है. नेक्स्ट पॉइंट इज नो ब्रांड रेगुलेशन. अगर इफ यू डोंट हैव अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, you can still sell your own brand product on Shopsy. Shopsy में सेल करने के लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. अगर आप खुद का भी ब्रांड सेल कर रहे हैं तो भी आप बिना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. Now the question is, how do I sell on Shopsy? So it's very simple for all of you to become seller on Shopsy. All you need to do is go to your existing account on seller.flipkart.com and you can go ahead and use the same listing method for Shopsy, and all you need to do is process a new listing, and I will show you what is the exact process that you need to follow if you want to add your products on Shopsy only. So here's how you can list your product on Shopsy Marketplace. You will go to your seller account, select listing, click on add new listing, then you will select single or bulk listing method. Once you have chosen your listing method, you will see this option and click on Shopsy Marketplace. Just select this option. You will be directed to vertical page. So select your category and vertical. While selecting the brand, use the toggle for Shopsy. And you can click on select brand and move ahead. Now everything remains as in Flipkart except for the catalog or packaging guidance. So here any process that you see in below table, registration or seller onboarding will be same as Flipkart on Shopsy. Listing and cataloging has been made simpler and easier on Shopsy. Order management same as Flipkart. Return management same as Flipkart. Payment settlements will be same as Flipkart. Packaging guidelines will be same as Flipkart, and seller panel will also be same as Flipkart. Now here's the Shopsy rate card. Vertical and commission will be 0. Fixed or closing fees will be 0. Payment fees will be 0. Forward shipping charges will be charged at the weight bucket level for net unit after RTO. It will not vary basis vertical. Reverse shipping, it will be charged at the weight bucket level and will only be applied on the RVP units. In case of FBF relevant services, fees like storage and packing would be levied. So I hope you all have understood everything about Shopsy. If you still have any queries, you can go ahead and start posting your questions in the Q&A box. I have our experts Ajita and Swapnil who would be addressing your queries related to Shopsy. I would request all attendees to please post your questions related to Shopsy only. If you have any other queries, you can reach out to seller support team. This session is only about Shopsy and our experts will be answering questions related to Shopsy only. Who has asked, can we list products in Shopsy which we have already listed on Flipkart? Yes, Mr. Tariq, you can do that. What you need to do is pretty simply go to your seller panel. अपने seller panel पे जाइए, अपना catalog file download कीजिए for the categories जहां पर भी Shopsy के verticals available हैं for listing. जब आपने वो catalog file download कर ली, तो Shopsy toggle button पे जाकर के, जो कि आपको add new listing के पेज पे दिख जाएगा, वहां से आप Shopsy vertical का template download कर सकते हैं, relevant template. उस relevant template में आप अपनी ये information डाल के उसे upload करेंगे, तो आपका नया FSN बन जाएगा कैटलॉग फाइल अपलोड करने से, और फिर आप उसे लाइव कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग फाइल के साथ. आई विल अगेन रिपीट दिस विद एन एग्जांपल. अगर आपने मान लीजिए टी शर्ट में कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है ऑलरेडी,
और आप चाहते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को शॉप्सी टी शर्ट में भी लिस्ट करें, तो अपने सेलर पैनल पे जाके टी शर्ट कैटेगरी की कैटलॉग फाइल को डाउनलोड कीजिए। ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाके शॉप्सी टॉगल बटन पे जाके शॉप्सी टी शर्ट का नया टेम्पलेट डाउनलोड कीजिए। इस इंफॉर्मेशन को उस नए टेम्पलेट पे पेस्ट करके अपलोड कर दीजिए हमारे सिस्टम पे, ताकि आपका नया एफएसएन जनरेट हो जाए। जैसे ही आपका नया एफएसएन जनरेट होगा, जो कि 24 to 28 आवर्स में हो जाना चाहिए जनरेट, तब आप अपनी लिस्टिंग लाइव कर सकते हैं बाय अपलोडिंग दी लिस्टिंग फाइल्स। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, yes, this is possible. How to move current listing same on Shopsy with rating and revenue? A user has asked this question. See, it is not possible to move your current listing with rating and revenue under Shopsy vertical. Okay. मैं वापस से रिपीट कर दूं, आपकी जितनी भी फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग्स हैं वो ऑलरेडी विजिबल हो चुकी हैं शॉप्सी पे, विच मींस आपकी लिस्टिंग्स दिख रही हैं शॉप्सी के ऊपर। बट अगर आपने उन लिस्टिंग्स को फ्लिपकार्ट वर्टिकल के अंदर बनाया है, वापस से वही एग्जांपल, अगर आपने टी शर्ट वर्टिकल पे लिस्ट कर रखी है फ्लिपकार्ट की, और उसमें अगर आपको X% कमीशन लगता है, वो कमीशन आपको लगता रहेगा, हालांकि ये प्रोडक्ट की विजिबिलिटी शॉप्सी के ऐप पे भी आ जाएगी। अगर आपको इस प्रोडक्ट को 0 कमीशन पर लिस्ट करना है, तो आपको इसका नया एफएसएन बनाना पड़ेगा शॉप्सी वर्टिकल के अंदर। अगर आप रीलिस्ट करते हैं इस प्रोडक्ट को, उस केस में आपकी रेटिंग और रेवेन्यू ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ये नया लिस्टिंग होगा सिस्टम के लिए। साहिल अग्रवाल has asked how to sell on Shopsy. We just explained it to you, Mr. Sahil. To sell on Shopsy, you need to, if you want to sell your products at 0% commission, in that case, you will have to list your products under Shopsy verticals. We have recently launched a few new verticals also. So we have now a total of approximately 50 verticals under Shopsy, which are available right now. You can directly list your products under these verticals at 0% commission, and you can start selling there. How can we log into Shopsy? Mr. Ganesh has asked. From a seller panel point of view, Mr. Ganesh, you don't need to do anything extra. Your existing seller panel or your existing seller account on Flipkart also works on Shopsy, so you don't need to log in at a different place. At the same time, you can also process your orders, etc. also exactly the way how you do it for Flipkart. Can I sell my brand furniture on this? Fab International has asked. Sir, not yet. We have not added the furniture vertical under Shopsy. We are continuously in the process of adding new and new verticals under Shopsy, and please keep checking the add my listing and SLC page for further updates on this. I uploaded many catalog in Shopsy, still not get order. Mr. Piyush has asked. Mr. Piyush, we have recently started the Shopsy platform and we are currently building up the supply. Please bear with us. I think we are gearing up for the festive season and we expect a lot of orders to flow into all of you from Shopsy verticals. Dolly has asked, what is the use of Shopsy if we need to pay commission? Ms. Dolly, I will again repeat that if there is a product listed under Flipkart vertical, its visibility will be available on Shopsy, but you will be charged commission as per Flipkart. However, if you want to list your products at 0% commission, you will have to list those products under Shopsy verticals. Please go to your seller panel. Please go to add new listings. Click on the Shopsy toggle button and list your products under Shopsy verticals. Once you list them under Shopsy verticals, you will not have to pay any commissions on those. आरडी मिश्रा साहब ने पूछा है कि अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए क्या प्रक्रिया है। आरडी सर, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। आपको अपने सेलर पैनल पे जाना है। सेलर पैनल पर जाकर आपको ऐड न्यू लिस्टिंग्स पे क्लिक करना है। ऐड न्यू लिस्टिंग्स पे आपको शॉप्सी का टॉगल बटन दिखेगा। शॉप्सी पे क्लिक करने पे जितने भी वर्टिकल्स शॉप्सी में अवेलेबल हैं उनका आप टेम्पलेट डाउनलोड कीजिए। उस टेम्पलेट में अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डालिए और हमारे सिस्टम पे अपलोड कीजिए। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि कैसे शॉप्सी के टॉगल बटन से आपको वर्टिकल्स मिल सकते हैं।
अगर आप शॉप्सी कर्टन में मान लीजिए जैसा एग्जांपल में दिख रहा है, अगर आप लिस्ट करना चाहेंगे कोई प्रोडक्ट तो आप इसका टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, और उसके अंदर जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके अपलोड करेंगे, आपका प्रोडक्ट 0% कमीशन पे शॉप्सी वर्टिकल पे लिस्ट हो जाएगा। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट को भी वहां डालना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको रीलिस्ट करना पड़ेगा। अपने फ्लिपकार्ट कैटलॉग फाइल को डाउनलोड करें, उस इंफॉर्मेशन को नए शॉप्सी टेम्पलेट पे कॉपी करें और इसे अपलोड कर दें। जब भी आप इसकी प्राइसिंग सेट करेंगे, इसको ज्यादा कंपेटिटिव सेट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये 0 कमीशन मार्केट प्लेस है, तो आपको चूंकि कोई कमीशन नहीं लग रहा है तो वो बेनिफिट हम कस्टमर को भी पास ऑन कर सकते हैं। Munazza has asked, can we add videos of the product too? Yes, Mr. Munazza, you can add videos of the product too. We are leveraging the same infrastructure that Flipkart works on. So if it is possible for you to add a product on Flipkart, it will be possible for you to add a video on Shopsy also. GST is required. Yes, sir, GST is required, but you don't need to create a new account again. If you already have an existing account on Flipkart, you can keep using the same account to even sell on Shopsy. But if we list through Flipkart, then we will not get benefit of 0% commission. Yes, sir. But on Flipkart, you will get a very different kind of audience that we are serving on from the Flipkart platform. And hence Flipkart and Shopsy are here to solve two different problems for you. Flipkart's platform will keep giving you sales from the existing channels that you are getting it. However, Shopsy is a 0 commission marketplace through which you can additionally reach out to a lot of consumers who will typically deal in the value conscious segment of products. Mr. Piyush Garg has asked, Flipkart order and Shopsy order same page show. Yes, sir. This is how it is going to happen. In order to make sellers' life easier, we have not made any new dashboard for which you will need any training. तो कोई नया dashboard नहीं है, आपको कोई नई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ताकि आपके लिए ये आसान रहे और फेस्टिव सीजन में आपको एडिशनल रेवेन्यू का चैनल मिले। इसलिए हम सेम सेलर पैनल के थ्रू ही आप अपने शॉप्सी के ऑर्डर्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप आज जैसे अपने ऑर्डर्स प्रोसेस करते हैं फ्लिपकार्ट पे, उसी तरह से आप अपने शॉप्सी के ऑर्डर्स को भी प्रोसेस कर सकते हैं। मैम, अगर फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं सेम आइटम का, शॉप्सी पर क्या कमीशन होगा? मिस्टर सोनू हैज आस्क्ड, मिस्टर सोनू, अगर ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट वर्टिकल में लिस्टेड है, अगर आपने टी शर्ट वर्टिकल में लिस्ट किया है फ्लिपकार्ट के, तो जो भी उस वर्टिकल का कमीशन लगता है आपको वही कमीशन लगेगा, चाहे ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म से सेल हो या शॉप्सी के प्लेटफॉर्म से। पर अगर आपने इस प्रोडक्ट को शॉप्सी टी शर्ट में लिस्ट किया है जाकर के, उस केस में आपको 0 कमीशन लगेगा इस प्रोडक्ट पे। Whether my present listing in Flipkart are also live on Shopsy, or we have to list all my present listing again in Shopsy? Mr. V Kumar has asked. Mr. V Kumar, I just answered this question. I'll again answer it for you, that your present listings are also visible on Shopsy, and I'm very specific with my words. Your present listings of Flipkart are also visible on Shopsy, but you will be charged the same commercials on these listings that you get charged under Flipkart verticals. If you want to move your listings to 0 commission, you will have to relist these listings under Shopsy verticals. To do that, please go to your add new listing page segment on your seller panel, download the new template for Shopsy verticals, and re-upload your products under Shopsy verticals. Mr. Piyush has asked, tell me about return charges. As Ria told during the presentation, the return charges are flat for us. We have a return charge of 101 rupee plus GST, and this is flat across local, zonal, and national. Mr. Munazza has asked, what is RTO and RVP? Sir, RTO is where a customer does not receive your product and the product is returned to origin. However, if the customer has received the product and does not like it for some reason, and then the product is returned, that is known as RVP. Vimal Raj has asked, can I list the same products on both marketplace, Flipkart and Shopsy? Since you said about commission rates will be different, kindly brief on this process. Mr. Vimal, I just answered this question, and let me again reiterate for you. Yes, you can list your same products on Shopsy as well as on Flipkart.
if a product is listed under a Flipkart vertical for now, that is also visible on Shopsy app. However, the commercial or the commission charged on this product will be same as what is charged on Flipkart verticals. If you want to move your listings to zero commissions, you will have to relist those products under Shopsy verticals. आपने Shopsy verticals में अगर list कर दिया है product को, तब आपको zero commission लगेगा इन products पे. Mr. Navneet has asked, what about packaging? Is it same as Flipkart or new? Mr. Navneet, same packaging, nothing changes in terms of packaging. आप अभी जैसी packaging use करते हैं Flipkart पे, same आप use कर सकते हैं Shopsy पे. I cannot sell my listed products on Flipkart here without Flipkart commission. You can, Mr. Chirag, and I just told you that you can list your products which are listed on Flipkart, but you will have to relist them under Shopsy verticals. आपने अगर Shopsy verticals में list किया है, तब आपको zero commission लगेगा. Mr. Manish has asked, you are saying packing would be same, and if end buyer will come to know that it is coming from Flipkart, how will you generate more orders? Mr. Manish, for now, we have tested this on our customer base and we have found out that this is not a major blocker for now. As we move forward in the months to come, we might think about white labeling the packaging, but this is not a problem for now. You can rest assured we will generate the demand. You can, for now, without any hassles, you can use the same packaging material and process that you used to do for Flipkart and dispatch your Shopsy orders as well. Mr. Hardik has asked, I list product on Shopsy, then also product not shows in Shopsy app. So you can check again. The listings are live on Shopsy and you can search them. When can we make changes post listing? That is Flipkart to Shopsy. Usvi ma'am, I could not get your question, but if you are asking that, can you migrate your listing from Flipkart to Shopsy? Yes, that is possible. For this, you will have to download your catalog file from your seller panel, copy the information under the Shopsy verticals, the one that you can see on your screen right now. Once you update this information in this new template, you can upload this information on the seller panel and your listings can be migrated to Shopsy as well. I would like to sell chairs, cupboards. I have already answered this question for you, Fab International, that we do not have a functionality of allowing furniture currently on Shopsy. We will keep adding more and more verticals under Shopsy. How to process order received through Shopsy, whether separate seller account or same seller account, not separate seller account. Can we move our existing listing from Flipkart to Shopsy, or do we create a new one? Mr. Animesh Das, I just answered this. आपकी फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग दिखेंगी शॉप्सी पे अगर आपने फ्लिपकार्ट पे लिस्ट की हुई है तो, बट उनमें आपको फ्लिपकार्ट के चार्जेस लगेंगे. अगर आपको अपनी लिस्टिंग को जीरो कमीशंस पर सेल करना है ताकि आप उसका प्राइस और बेहतर कर सके अपने कस्टमर के लिए, तो आपको इन लिस्टिंग्स को वापस से शॉप्सी वर्टिकल्स के अंदर लिस्ट करना पड़ेगा. उस केस में आपको 0% कमीशन पे आप सेल कर पाएंगे इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेहतर रेट पे अपने कस्टमर्स को. How will we get the payment of sold products? Sonam Singhal is asking. That same जैसे आपको अभी Flipkart पे मिलता है, same आपका payment cycle रहेगा. Nothing changes there. I have listed many items on Flipkart. Mr. Zayed is asking. Now what do I need to do to list my products on Shopsy? I have just answered this question. Will there be more categories added? Which and when? Yes, Mr. Reshma, Miss Reshma, we are in the process of adding new and new categories. We have already increased our number of categories from 25 to 50. You can check what new categories have been added under Add My Listings tab or on the SLC. You will and keep checking this space for more listings that we will keep adding here. Miss Pooja is asking, how will order processing in Shopsy will be through Flipkart seller panel only? Yes, ma'am, I have already answered this. Mr. Pramod is asking, will our Flipkart rating be affected if our Shopsy rating degrades? So Mr. Prabodh, if you have a listing which is live on Flipkart, it is visible on both Flipkart and Shopsy platforms, and your listings from both the platforms combined will be the listing of your product, of your overall product, which is listed under Flipkart. How to move my current listing on Shopsy? I have answered this question. Can you please explain Shopsy again, because the voice is not clear, so I missed it. Ms. Priyanka, I think we will be sharing the recording of this session with you. You can probably play it again, and this should help you answer this question. We are under Flipkart Smart Fulfillment in Shopsy, also mark under Smart or Seller. Mr. Mahendra, आप
अभी जिस भी तरीके से फ्लिपकार्ट पे काम करते हैं सेम रेप्लिकेट होगा. सो इफ यू आर अ स्मार्ट और seller there, you will be the same on Shopsy. How the customer place the order on Shopsy? Mr. Karthikeyan is asking. Mr. Karthikeyan, Shopsy is a different app through which a customer can place the order. It's compulsory to fill all the information when we do single listing. Yes, sir. There are mandatory fields and there are good to have fields, but you will have to fill all the mandatory fields for listing on Shopsy. However, we have made your life very easy by lowering our guard of the cataloging, and there are very less number of mandatory fields which are there now, which you have to fill on Shopsy. I want to ask, is there any other panel or same as Flipkart? There is same panel, sir. No changes in terms of the panel. To process the order also same panel as Flipkart. Mr. Manish Kumar is asking, packaging should be plain where end buyer will not come to know. No, sir, Mr. Manish. Currently, you can continue using the same packaging that you use for Flipkart. Do not change the procedure or any packaging material. You do not have to do anything new. Please keep using whatever you are using right now with Flipkart. Some categories are not available. Yes, sir, they are not. We will keep adding more and more categories. Listing, does it affect running Flipkart listing, sales in Flipkart? Mr. Navneet, no. If you list a new product under Shopsy, it is a new FSN and hence it will not affect any of your listings on Flipkart for now. How to sell simultaneously on both platforms? Mr. Praveen, you can simply list your product under both the verticals, under Flipkart verticals as well as under Shopsy verticals. In that case, you can sell simultaneously on both the platforms. Mr. V. Kumar is asking, if I receive order through Shopsy, how do I know is this particular order is from Flipkart or Shopsy? Mr. V. Kumar, if the order is coming for a product listed under Shopsy vertical, only then you will be able to differentiate whether that order is coming from Shopsy or Flipkart. If your product is listed under a Flipkart vertical, you will not be able to differentiate whether it is coming from Flipkart or Shopsy. And since the commercials are also the same, you even don't need to worry about whether the order is coming from Flipkart or Shopsy. Why do we need to pay commission if already on Flipkart? Miss Dolly is asking. Miss Dolly, because all the verticals under Flipkart have a different commercial than the verticals of Shopsy. So if you list under Flipkart verticals, you will have to keep paying commission whatever are set today. If you want to move your listing to zero commissions, you will have to relist them under Shopsy. Can we add products both on Flipkart and Shopsy? Yes. Will it be? It will be good if you answer Hindi. Mr. Zayed, I have been trying to answer. मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने सवाल हो सकें. Can you please send me recorded video on my mail? Yes, we will send it to you. If I want to avail 0% commission, then I would have to remove my products from Flipkart. नहीं मिस्टर वत्सल, आपको रिमूव नहीं करने हैं अपने प्रोडक्ट्स. आपके प्रोडक्ट्स जो फ्लिपकार्ट पर हैं वो फ्लिपकार्ट की कमीशन पे सेल होते रहेंगे. आप वहां से आपको अलग तरीके का कस्टमर मिलेगा. शॉप्सी पे अगर आपको जीरो कमीशन पे लिस्ट करना है प्रोडक्ट, तो आप सेम प्रोडक्ट्स को शॉप्सी वर्टिकल्स में लिस्ट कर सकते हैं. जब आप ऐसा करेंगे तो आपके वो प्रोडक्ट्स जीरो कमीशन पे सेल होने लग जाएंगे. If I list the item in Shopsy, can customer also see the same listing in Flipkart? नहीं मिस्टर सुनील कुमार, अगर आपने Shopsy वर्टिकल पे कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया है तो वो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे नहीं दिखेगा. जीरो कमीशन पर जो प्रोडक्ट Shopsy वर्टिकल में आप लिस्ट करेंगे वो फ्लिपकार्ट पर नहीं दिखेगा. हालांकि जो भी प्रोडक्ट आपने फ्लिपकार्ट वर्टिकल्स पे लिस्ट किए हैं वो प्रोडक्ट्स Shopsy पे जरूर दिखेंगे. उन पे कमीशंस फ्लिपकार्ट वाले ही लगेंगे. हालांकि आई होप आई वाज एबल टू आंसर दिस. Shopsy पर शेयर का ऑप्शन आ रहा है, बाय नाउ का नहीं. हाँ जी सोनू सर, दिस इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म. दिस इज made for different kind of audience. If you click on that product, you should be able to see the buy now button also. अगर आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक करके उसके अंदर जाएंगे तो आपको buy now का बटन भी दिख जाएगा. Mr. Puneet Garg is asking, is there any separate tape for Shopsy? No, sir, there is no separate tape. Please keep using the same packaging material and process that you use today for Flipkart. How to process the order, Mr. Vinayak? Same as Flipkart. We want to know if Shopsy is only for lower range product, as we sell high quality and price range is a little difference. Ms. Megha Arora is asking. Ms. Megha, the platform of Shopsy is made for the value conscious customer. When I say value conscious customer, I do not necessarily mean low ASP customer. A value conscious customer will always pay you the worth of the product if it is worth the value. So we do recommend
to list products in the lower ASP bracket, but there is no restriction if you want to even list a product in the higher ASP bucket. That's completely fine with us. मिस्टर जितेंद्र, बुक सेल करने का ऑप्शन अभी नहीं है. प्लीज SLC और हमारे एड न्यू लिस्टिंग पेज को चेक करते रहें. वी विल कीप एड न्यू लिस्टिंग्स देयर. How can I list the products to Shopsy which are already on Flipkart? I just answered this question. I can't list product on Shopsy. My vertical is files and photos. So how can we add vertical? You cannot add a new vertical, Miss Sangeeta. जब भी नए verticals add होंगे आपको पता चल जाएगा. And cannot find cushion cover. Are there only few categories on Shopsy? Yes, Mr. Surinder. अभी कुछ ही categories हैं Shopsy पे. As we will keep adding more categories, we will keep informing you through SLC, and you can keep checking it on the add new listings tab under your seller panel. Next is from Mr. V. Kumar. How about sales returns and invoice for GST? Whether separate invoice will be generated? How to download monthly and return for GST for Shopsy? Mr. V. Kumar, सब कुछ Flipkart जैसे होगा. आपको कोई भी प्रोसेस में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप जैसे अभी Flipkart के ऑर्डर्स प्रोसेस करते हैं, सेम तरीके से आप Shopsy के भी प्रोसेस करते रहिए. जैसे आपको आज सारी इंफॉर्मेशन सेल रिटर्न और इनवॉइस की मिलती है, वैसे ही आपको सारी इंफॉर्मेशन Shopsy के ऑर्डर्स की भी अपने ही सेलर पैनल पे मिल जाएगी. On Shopsy as a customer, if you want to review his product as a customer on Shopsy, Mr. Abhishek Tomar is asking. Mr. Abhishek, you can simply search for your product, how you search it today on Flipkart, and you can rate your products. Miss Anita is asking, can we list candles on Shopsy? No, Miss Anita, not for now. Can we list cookware and kitchenware listing in Shopsy? Omkar Enterprises is asking. We are adding new and new verticals to the Shopsy verticals. Kitchen is one of our high priority verticals. Please keep checking the add new verticals and SLC so that you come to know that what new verticals have been added. How can I upload bulk listing? Sahaj Enterprises is asking. You can upload bulk listing as you do it today for Flipkart. No changes there. Can we list product Flipkart as well as Shopsy automatically? नहीं रंजीत राय साहब, automatically नहीं change होंगी या नहीं कॉपी होंगी आपकी लिस्टिंग्स ऑन Shopsy. अगर आपको Shopsy पे लिस्ट करना है, so you will have to go under Shopsy verticals and relist your products there. मेकअप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. प्लीज कीप चेकिंग आवर एड न्यू लिस्टिंग्स टैब एंड SLC फॉर दिस अपडेट. What is Shopsy vertical? Munazza is asking. Mr. Munazza, as you can see on your screen, these are the verticals that I'm talking about. Like Shopsy curtain is one of the verticals under which you can list the product. आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो Shopsy curtain है, that is a vertical under which you can list a product on Flipkart for Shopsy. Is there traffic of customers on Shopsy? Yes sir, there is. Shopsy को use कैसे करना है? We just explained it. Same SKU ID can be used in both Flipkart and Shopsy. Mr. Mahinder is asking. Mr. Mahinder, if you use exactly same SKU ID, it might give you a duplication error. So suppose there is a SKU ID, for example, which is 123 for a product that you have set under Flipkart. I would suggest you to append Shopsy underscore or something like that to that SKU ID and make it Shopsy underscore 123 and list it under Shopsy so that it is easier for you to understand. मैं इसको हिंदी में भी बता देता हूँ. अगर आपकी SKU ID 1 2 3 है Flipkart के ऊपर और अगर आप सेम SKU ID को अपलोड करते हैं और आपको डुप्लीकेट एरर देता है सिस्टम, उस केस में 1 2 3 के आगे Shopsy ऐड कर दीजिए या उसके पीछे Shopsy ऐड कर दीजिए ताकि आपकी SKU ID भी ना बदले और Shopsy लगने के कारण वो डुप्लीकेट का एरर भी नहीं देगा. That ways you can list your products. If I list new listing in Shopsy, it is reflected in Shopsy. Do I require to create new listing in Shopsy? If I list, तो सर अगर आपने Flipkart पे लिस्ट किया है तो वो रिफ्लेक्ट तो करेगी Shopsy पे, बट आपको कमीशन Flipkart के हिसाब से ही लगेगा. अगर आपको 0% कमीशन पे सेल करना है तो उसके लिए आपको अपनी लिस्टिंग्स को Shopsy वर्टिकल में ऐड करना होगा. Mr. Hardik is asking, what is the payment cycle of Shopsy? Mr. Hardik, the payment cycle of Shopsy is same as that of Flipkart. Can I directly list in the Shopsy at 0% commission with the same account, Miss Nisha? Yes, Miss Nisha, with the same account you can do it. आपको बस Shopsy vertical के अंदर जाके list करना है उन products को. Mr. Rohit has asked, is it available on iOS? No, Mr. Rohit, currently Shopsy is not available on iOS.
रिटर्न चार्ज क्या होगा? मिस्टर सोनू इज आस्किंग। मिस्टर सोनू, रिटर्न चार्जेस would be 101 rupee plus GST across local, zonal and national. How can we advertise our product on Shopsy? Mr. Jayesh has asked. This is a different question. Mr. Jayesh, currently there is no way to advertise your products on Shopsy. Advertisement is only available on Flipkart for now. For now, since this is a starting point for the platform, we would suggest you to make as many listings live on Shopsy verticals as possible. Since you will be doing this as one of the first sellers on the platform, this will only help you to make your listings come up better on Shopsy. अगर मेरा फ्लिपकार्ट पे जो लिस्टिंग है उसको शॉप्सी पर लिस्ट करता हूं तो सेम मॉडलिंग चलेगा कि न्यू मॉडलिंग करवाना पड़ेगा? अ यूजर हैज आस्क्ड। सर, शॉप्सी पे प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आपको मॉडल फोटोशूट की जरूरत नहीं है। आप टेबल टॉप पे रख के इमेज खींच सकते हैं, आप जमीन पर रख के फोटो खींच सकते हैं, आप अपने फोन से फोटो लेके डाल सकते हैं, आप हैंगर या मैनिक्विन पे फोटो लेके डाल सकते हैं। शॉप्सी पे लिस्टिंग करने के लिए मॉडल फोटोशूट या स्टूडियो फोटोशूट की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहीं से भी फोटो खींचकर इस प्रोडक्ट को बहुत इजीली शॉप्सी पे लिस्ट कर सकते हैं। आपको कोई नए मॉडल फोटोशूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। Mr. Ranjit is asking, what is the business model of Shopsy and how it is different from Flipkart? Sir, Ria just told you during the presentation that we are a zero commission marketplace who are going to serve to a very different kind of audience, starting with the reselling audience. So the kind of audience we cater to is going to be very different. So is going to be the choice of the product for these consumers. Do you have safety claims and returns claims here too? Yes, Mr. Munazza, we have all the facilities that are enabled by Flipkart platform. So you will be able to choose all of these. How can we log into Shopsy? Ms. Renu is asking. Ms. Renu, you can log into Shopsy. To log into Shopsy, you do not need or have a different login. आप अपने existing Flipkart account से login करके Shopsy verticals में listings बना सकती हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर पुनीत गर्ग इज अगेन आस्किंग, इज शॉप्सी चार्ज फॉर आरटीओ? नो सर, आरटीओ के लिए कोई चार्ज नहीं होता। मिस्टर प्रवीण जैन इज आस्किंग, ग्रीन पैकिंग इज कंपलसरी? मिस्टर प्रवीण, अगर आज आपको फ्लिपकार्ट पर किसी भी तरीके से ग्रीन पैकेजिंग कंपलसरी है तो वो सेम चीज फ्लिपकार्ट पर भी अप्लाई होगी। मिस शिल्पा इज आस्किंग, इफ आई विल नॉट डिलीट फ्रॉम फ्लिपकार्ट देन लिस्टिंग, हाउ विल लिस्टिंग शो ऑन शॉप्सी? मिस शिल्पा, आपके फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स अगर आप शॉप्सी वर्टिकल्स पे लिस्ट करेंगी तो शॉप्सी वर्टिकल्स के प्रोडक्ट्स को अलग से विजिबिलिटी मिलेगी ऑन शॉप्सी ऐप एंड हेंस योर प्रोडक्ट्स विल नॉट गेट रिपीटेड। सो रेस्ट अश्योर्ड, आप अपने प्रोडक्ट्स को अगर शॉप्सी वर्टिकल्स पे लिस्ट करेंगी, इससे फायदा ये होगा कि आपको जीरो कमीशन पे लिस्ट करने का मौका मिलेगा। आप ज्यादा अच्छा प्राइस कस्टमर तक पास ऑन कर पाएंगे और इन प्रोडक्ट्स को हम अलग से विजिबिलिटी दे पाएंगे एक नए ऐप के ऊपर। Since Shopsy is zero commission, we will list products at competitive prices. Now you say my Flipkart listing are also visible on Shopsy. This way my same product will be visible at two different prices. Mr. Vishal, I just answered this question, Mr. Vishal. मैं वापस से एक बार आंसर कर देता हूं कि आपके Shopsy के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करेंगे Shopsy वर्टिकल्स पे, उन प्रोडक्ट्स को हम अलग से विजिबिलिटी देंगे एंड रेस्ट एश्योर्ड आपके प्रोडक्ट्स रिपीट नहीं होंगे। आप आराम से इनको लिस्ट कर सकते हैं शॉप्सी वर्टिकल्स पे एट 0% कमीशन। इससे आप ज्यादा अच्छा प्राइस दे पाएंगे अपने कस्टमर को एंड वी विल टेक केयर ऑफ इट कि आपके प्रोडक्ट्स रिपीट होके ना दिखें कस्टमर्स को। एनी पेज इंफॉर्मेशन वेयर वी कैन फाइंड एग्जैक्ट सेटलमेंट, profit and return so seller can keep margin accordingly since you said there is return charges of 100 plus GST? Miss Reshma, आप अभी जैसे भी अपने सेटलमेंट का पता लगाते हैं, मान लीजिए अभी आपने किसी प्रोडक्ट को, आपने किसी दो वर्टिकल्स में सपोज आपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रखे हैं, एक टी शर्ट में और जीन्स में, तो जैसे आज आपको पता चलता है कि कितने टी शर्ट्स और कितने जीन्स सेल हुए हैं आपके, सिमिलरली आपको पता लग जाएगा कि कितने प्रोडक्ट शॉप्सी वर्टिकल्स में सेल हुए हैं और कितने प्रोडक्ट्स नॉन शॉप्सी वर्टिकल्स में सेल हुए हैं। तो आप जैसे भी अभी देखते हैं अपना सेटलमेंट, आप वैसे ही चेक कर सकते हैं और वैसे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी।
सो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका रिटर्न कितना है और आपको कितना चेंजेस करना है उस अगर अपनी प्राइसिंग में कुछ बिल्ड करना है तो. Mr. Puneet is again asking what will be the shipping charges on Shopsy. Mr. Puneet, the shipping charges on Shopsy, as Ria also told during the presentation, is flat across verticals. तो across categories आपको same shipping charge लगता है. Across zonal, national, local आपको same shipping charges लगते हैं. The charges for first 500 grams is 65 rupees plus GST, and charges for up to 1 kg is 76 rupees plus GST. ये फ्लैट चार्जेस आपको पे करने होंगे अगर आप शॉप्सी वर्टिकल्स में प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो.